हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नंबर 8 थोड़ा लेंदी है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उसी के हिसाब से उसकी जो एक्सरसाइज की डिक्टेशंस हैं उनको भी डिवाइड किया गया है। तो दिस इज चैप्टर नंबर 8, पार्ट नंबर 1, एस सर्कल। The very frequently occurring consonant S and its corresponding heavy sound Z are represented by a small circle as well as by the strokes S and Z. ये S and Z strokes हमने पढ़े थे। इसके द्वारा तो हमने कॉन्सोनेंट बनाना सीखा ही है। अब इसकी जब साउंड आएगी तो हम इसको एस सर्कल से भी रिप्रेजेंट, एक स्मॉल सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि एस को दर्शाएगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स सिंगुलर टू प्लूरल होते हैं जिसमें एस की साउंड आती है, तो वो बहुत इजी एंड कन्वीनियंट रहता है कि एस सर्कल यूज़ हो। ठीक है, जैसे जैसे हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ आएगा। The small circle joins easily to other consonant strokes at the beginning, in the middle or at the end of a word. Small circle easily join हो जाता है किसी भी consonant के साथ, भले ही वो डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक्स हो और कर्व स्ट्रोक्स हो, मिडल में भी एंड एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक भी इजीली ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड फर्स्ट। जब किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में एस सर्कल बनेगा तो वो पहले ही पढ़ा जाएगा। एज इन सीम, सेफ, तो पहले क्या आया, स का साउंड आया, तो हम एस सर्कल बनाते हुए एफ बनाते हैं और फिर पुटिंग द डॉट ऑन द सेकेंड प्लेस ऑफ एफ। हाँ, एट द नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ ए वर्ड। अगर एंड में आता है एज इन फेस तो बाद में पढ़ते हैं। द एस सर्कल इज ऑलवेज रीड लास्ट। यही बता रहे हैं कि अगर एंड में आएगा तो उसको हमेशा एंड में प्रोनाउंस करेंगे और अगर फर्स्ट में आएगा तो उसको हमेशा फर्स्ट में प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, रीड करेंगे। द एस सर्कल इज रिटन इनसाइड अ कर्व। ठीक है, अब इसमें स्ट्रेट स्ट्रोक्स के एग्जाम्पल्स ना देके कर्व स्ट्रोक्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ए पार्ट बिलोंग्स टू एट द एंड ऑफ अ एस सर्कल। जो भी वर्ड्स एस सर्कल से एंड हो रहे हैं ए पार्ट में वो बताए गए हैं, पढ़ेंगे। फेस, एफ विद एस सर्कल ऑन द लाइन विद सेकेंड प्लेस डॉट, heavy dot vowel. D's, D through the line with S circle and third place heavy dot vowel. Shoes, ish through the line with S circle with heavy dot dash, third place vowel. Loss, L upward with S circle and first place light dash vowel. Nose, N stroke S circle on the line and heavy dash vowel. Names, N stroke M stroke S circle on the line, heavy dot on the second place of N. Bills, B through the line upward L with S circle and put the dot on the third place of L before it. Else, upward L with S circle and put the light dot on the second place of L before it. Anxious, NG above the line with ish with S circle, put the first place dot and light dash on the second place of ish after it. Less, upward L with S circle, light dot on the second place of L. Months, M stroke N stroke ith stroke on the line with S circle and light dash on the second place of M. Leaves, upward L through the line, V with S circle, heavy dot on the third place of V before it. Shows, ish on the line with S circle, heavy dash on the second place of it. Lose, L through the line with S circle, third place dash vowel is used here. Miss, M with S circle on the line and light dot on the third place of M after it is used here. Arms, downward R with M with S circle above the line and heavy dot or at the first place of
R before it. Ears, downward R with S circle through the line, and third place, put the third place vowel on the third place of downward R before it. Nice, N, S circle above the line, I diphthong is used here. Size, S stroke with S circle, ठीक है, एक S के लिए स्ट्रोक बना, नेक्स्ट Z के लिए सर्कल बना, size, and I diphthong is used here above the line. Voice, I and oi क्या रहते हैं, फर्स्ट प्लेस diphthong है. Voice, V with S circle above the line with oi diphthong. In voice, in N, and cut the V through the line with a circle, light dot, and oi diphthong. Announce, N with another N with S circle above the line. क्यों बना above the line? क्योंकि पहला वोवल जो है वो ए का है, फर्स्ट प्लेस का है, और जो लास्ट है वो क्या है, आओ का डिफ्थोंग, अनाउंस, ठीक है. Advice, D above the line, V through the line with a circle, A light dot before D, and I diphthong after V is used here. N with a circle on the line for news, and U diphthong is used here for news. Views, V through the line with a circle, and U diphthong is used here. Refuse, upward R with F stroke with a circle on the line, a light dot on the second place of upward R, and U diphthong is used here at the end of F. Items, I diphthong joined with T with M with S circle, and put a light dot on the second place of T is used here above the line. Issues, issue हमने पढ़ा था, S circle with a diphthong, U diphthong, joint diphthong था. अब इसमें क्या, S stroke with S circle through the line, and put the light vowel before S stroke, and a diphthong U is after it. Errors, downward R on the line, another downward R with S circle, and light dot and light dash is used here on the second place of R. Forms, F above the line, downward R, M with S circle, light dash on the first place of F. Office, F with S circle above the line, light dash on the first place of F before it, and third place of light dot is used here. Affairs, F above the line, downward R with S circle, light dot before F at the first place of F, and heavy dot on the second place of F used here. So these are the at the end of the S circle examples. एंड बी पार्ट में क्या है, सभी जो हैं एस से स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या बिगनिंग ऑफ अ वर्ड में एस सर्कल यूज हो रहा है, तो बोलेंगे कैसे, सेफ, तो पहले क्या साउंड आया, एस सर्कल से बनाते हुए एफ का स्ट्रोक ऑन द लाइन, ठीक है. पुट द सेकेंड प्लेस डॉट, हैवी डॉट वॉवल बिफोर इट. सीम, एस सर्कल विद एम ऑन द लाइन, पुट द थर्ड heavy dot vowel on the third place of M before it. Slow, S circle with upward L on the line with heavy dash on the second place. Song, S circle with NG above the line, light dash on the first place of NG before it. S circle L with K, silk, through the line से बनते हुए ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है, एंड लाइट डॉट ऑन द थर्ड प्लेस ऑफ एल बिफोर इट इज यूज्ड. क्यों आया, क्योंकि एल से पहले ई की साउंड आ रही है, इसलिए एल से पहले डॉट लगेगा, ठीक है. एस के लिए तो हमने सर्कल बना दिया. सर, एस सर्कल डाउनवर्ड आर ऑन द लाइन एंड लाइट डॉट ऑन द सेकेंड प्लेस ऑफ आर बिफोर इट. स्मॉल, एस सर्कल एम अपवर्ड एल अबव द लाइन, heavy dash vowel on the first place of M after it. Sunday, S circle N D on the line, light dash vowel on the second place of N,
and heavy dot vowel on the second place of D is used here. Sense S circle N with another S circle is used here. अब इसका beginning भी और end भी दोनों में ही S circle use किया and put the light dot on the second place of N before it. Sail S circle upward L, heavy dot on the second place of L before it. Similar है sails, पहले क्या S circle upward L S circle and then put the vowel of heavy dot. Save S circle V on the line, put the heavy dot on the second place of it. Saving S circle V on the line with NG. Clear है? Next, sell S circle upward L and light dot on the second place of L before it. Selling, same outline with NG. Sleep S circle L through the line से start करेंगे क्योंकि थर्ड प्लेस है, जैसे सिल्क था वैसे ही स्लीप है. S circle upward L with P, heavy dot on the third place of P before it. S circle N on the line with heavy dash on the second place of N. S circle M on the line is used here for sum and light dash on the second place of M before it. S circle N on the line and a heavy dash on the third place of N before it. Sun S circle same outline है, S circle N on the line and light dash on the second place of N before it. Since S circle N, another S circle on the line and light dot third place vowel is used here before it. Similar, S circle M through the line, upward L, downward R and three dots vowel is used here. All the three dots क्या light dots are used here. See me एक M से पहले है, एक M के बाद है थर्ड प्लेस वॉवल, तो वो कहाँ लगेगा L से पहले लगेगा, ठीक है. और एक L के बाद है फर्स्ट प्लेस वॉवल. दो थर्ड प्लेस वॉवल हैं पहले के एंड लास्ट का L के बाद जो वॉवल है वो फर्स्ट प्लेस है, ठीक है. Soil S circle upward L and OI diphthong is used here above the line. South S circle it through the line and ow diphthong is used here, तो बिफोर बनेगा साउथ. थ से पहले की साउंड है आउ, है ना, तो वो बिफोर इट बनेगा. साइन एस सर्कल एन अबव द लाइन विद आई डिप्थोंग इज यूज्ड हियर. सैलरी एस सर्कल अपवर्ड एल अपवर्ड आर above the line and three dots are used here. All dots are light dots on the first place of celery. फर्स्ट प्लेस वॉवल्स हैं दोनों, पहले वाले एल से पहले और एल के बाद, और आर के बाद वाला वाई वाला वॉवल क्या है, थर्ड प्लेस वॉवल है, ठीक है. तो ये क्या क्या पढ़ लिए हमने कि जो एट द एंड से स्टार्ट होते हैं, बिगनिंग से स्टार्ट होते हैं. और अब सी पार्ट क्या, जो मिडल में एस सर्कल लगता है वो कैसे लगता है. एम मैसेज एम एस सर्कल विद जी, ईजी है बनाना ऑन द लाइन एंड दोनों ही क्या लाइट डॉट सेकेंड प्लेस वॉवल, ठीक है. एब्सेंस बी एस सर्कल एन विद एस सर्कल अबव द लाइन, पहला फर्स्ट प्लेस वॉवल है एंड दूसरा सेकेंड प्लेस वॉवल है. बिजनेस बी थ्रू द लाइन एस सर्कल एन एस सर्कल, पहला वॉवल थर्ड प्लेस है, दूसरा वॉवल सेकेंड प्लेस है, दोनों ही लाइट डॉट हैं. कजिन के एस सर्कल एन ऑन द लाइन, पहला क्या है लाइट डैश वॉवल सेकेंड प्लेस एंड light dot vowel third place is used here. Reason upward R with a circle with N through the line and first heavy dot on the third place and second vowel क्या light dash on the second place of N before it. Receive R upward S circle V and receive E का dot है, a heavy dot on the third place of P before it. क्लियर है. नेक्स्ट इज रिसीविंग, जैसे रिसीव बनाया सेम एनजी ऐड कर देंगे. पासिंग पी विद एस सर्कल पास बन जाएगा अबव द लाइन और उसी का पी एस सर्कल विद एनजी क्या पासिंग एंड है लाइट डॉट ऑन द फर्स्ट प्लेस ऑफ पी इज यूज्ड हियर. डजन डी एस सर्कल एन ऑन द लाइन,
क्या है? लाइट डैश ऑन द सेकेंड प्लेस ऑफ डी एंड लाइट डॉट ऑन द सेकेंड प्लेस ऑफ एन बिफोर इट. Inside n stroke s circle d, light dot on the third place of n before it, and I diphthong on the first place of d before it. Inside. Clear है? Music. M S circle K, U diphthong is used here on the third place of M, and light dot on the third place of K is used here before it. Wednesday. इसमें D silent रहता है. क्या sound है? Wednesday. Way upward on the line, N stroke with S circle with D. Light dot on the second place of way and heavy dot on the second place of D is used here. क्योंकि ये proper noun है तो double tick underneath. These are the short forms of this chapter. A small circle put above the line represents has or as. Same circle represents on the line his or is. S circle V on the line represents several. D, it, D, dark wala, D with S circle above the line is used here for those. Same outline on the line for this and through the line for thus. ठीक है? Note, has the, अब इसमें हमने ये ऐड करना हो, फ्रेज ऐड करना हो द का, तो कैसे करेंगे? किस मोशन से? ऐसे बनाते हुए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक है? राइट सर्कल से बनाते हुए लेफ्ट की तरफ एरो दिया गया है. हैज द, एज द, अबव द लाइन, इज द, ऑन द लाइन. क्लियर है? इसका एक्सरसाइज नंबर 24 एंड 25 का डिक्टेशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा एंड पार्ट 2 एंड पार्ट 3 हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे. आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.